गुजराती बोलने वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिला था बिकॉज शी वाज वो हमेशा बोलते थे बहुत ज्यादा। सबटाइटल्स ही और सेट पे भी यही बोलते थे कि सबटाइटल करके बात बीच बीच में कोड में कुछ बात करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा था भाई। फेल्ट लाइक सम MI5 कोड गोइंग ऑन। फाइनली यही समझ आती कि ठेपले की बात हो रही है। प्लीज मेरे बारे में कोई रूमर ही नहीं उड़ाता कि जिसको लेके मैं सोशल सोचूं मीडिया कि में ही नहीं है कि क्या रूमर कुछ होगा तो हाँ, बिना बात करना ट्रबल नहीं चाहिए मुझे, बल्कि कि अब कहीं से कोई विजडम। फालतू की बात आ जाए। हाय मैं हूँ करिश्मा तन्ना हाय, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब हाय, मैं हूँ हरमन बवेजा और आप देख रहे हैं और बताओ। और बताओ। और बताओ विद स्तुति। द नेम ऑफ द शो और बताओ, मेरा नाम है स्तुति और अभी और बताओ जिनको हम बोलने वाले हैं इज द ब्रिलियंट स्टार कास्ट ऑफ द न्यू शो दैट यू कैन वॉच ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड स्कूप। सो वी हैव ज़ीशान, वी हैव करिश्मा, वी हैव हरमन। वेलकम टू और बताओ। थैंक यू सो मच। शो के नाम में सवाल छुपा है जी। और बताओ से शुरू करते हैं और आपसे शुरू करते हैं। बड़े टाइम बाद आप नजर आ रहे जी। हैं, कहाँ थे आप? एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वेल मतलब था तो यहीं पे, मतलब बट आई वाज जस्ट बिजी डूइंग अदर थिंग्स या and I would say I'm blessed that I got this opportunity and I'm very happy that you liked it because, you know, maybe that's the fruit at the end of the journey, let's put it that way. So yeah. You know, this is actually a question I want to ask all three of you. 4 episodes अभी इस शो के मैं तो देख चुकी हूँ, आप लोगों ने चाहे देखे या नहीं, and that's why I love the show, I love the performance, and I'm going to start with the fact कि casting इतनी spot on है, not just for you three but every character in this show. How did you guys land up with this role? Starting with you, Zeeshan. मेरा तो बड़ी बोरिंग सी कहानी है। हंसल सर से मैं मिला, मतलब मुकेश ने बुलाया था अपने ऑफिस, वहाँ पे हंसल सर भी बैठे थे, वो मिले और उन्होंने बताया कि एक शो बना रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स के लिए और एक बहुत अच्छा रोल है, वो कर ले। आपने और कुछ नहीं बोला। ठीक ये भी ठीक है। मेरा तो इस तरह से बोल रहे हैं आई गॉट दिस रोल। या Not bad. और कोई सेकंड सवाल नहीं था। नहीं, इसमें क्या सवाल होगा, उन्होंने बोला मैं तुझे स्क्रिप्ट भेज दूंगा, पढ़ लेना। मैंने कहा ओके। Easy, smooth. करिश्मा। और मेरा तो बिल्कुल ऑपोजिट था क्योंकि मैं हंसल सर को पहले मिली ही नहीं थी। तो मुकेश छाबड़ा की टीम ने मुझे फ़ोन किया था और मैंने ऑडिशन दिया और मुझे पता चला इट्स फॉर नेटफ्लिक्स एंड हंसल मेहता इज़ डायरेक्टिंग इट। तो ऑफ कोर्स मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई थे पर लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गई थी एंड आई ऑडिशन एज अ नॉर्मल ऑडिशन एंड थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस रोल। सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। जब स्क्रिप्ट रीडिंग चालू हुई तब मैं पहली बार हंसल सर से मिली और तब आई थिंक सिंक इन हुआ दैट आई एम एक्चुअली डूइंग दिस पार्ट। Brilliant. And you've literally, you know, bite into the role और बहुत ही feel के साथ। Harman, what about you? Well, मेरा दोनों से भी opposite है। If there is a third opposite, let's call it a triangle. So me, Hansal and Mukesh Chabra, who's the casting director, हम लोग तीनों किसी और फिल्म के ऊपर कास्टिंग का डिस्कशन कर रहे थे। Something that I was, you know, that I've written. इनका ही कास्टिंग हो गया। तो वो कास्टिंग करते करते suddenly I'm seeing in, you know, these two characters have some खुसफुस going on. तो अब suddenly से आप लोगों का ध्यान नहीं है, लोग जो बात कर रहे हैं, suddenly they turn around and say, listen, we've got a role for you. So I said, but I've not been acting at all. I've moved on. I'm doing other things. And then of course Hansal was like, but I genuinely think you fit the part. So फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को एक बार ऑडिशन कर लो क्योंकि मुझे, you know, I appreciate the confidence, but I should be confident myself. Yeah. You know, and it's a big thing because, you know, of course it's Hansal, it's coming on Netflix, it's things that, you know, everything ticks the box that you would like to do it. I think audition ठीक ठाक रहा, you know, which is why they finally decided to say, okay, let's go ahead with it. And then of course coupled with the great cast, as you have rightly mentioned, I think it adds to the overall experience of, you know, a good performance by everyone and hopefully a great show. अच्छा, क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे शो देखने के बाद हो रहा है, so a lot of questions are going to be about the show. We are not going to tell you what's happening, but one thing that I noticed is, like I said, casting top notch, performance is great, and yet nobody is trying to, you know, dominate the other. कि मैं, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आप एडिटर ही हैं। मतलब ये कैसे, किसको देखा आपने? Like you were so controlled. I was like, what is this? नहीं, मतलब देखा किसी को नहीं। आई थिंक वही कम्युनिकेट करना था। हंसल सर इसी तरह से काम करते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट है और आप किसी एक पर्टिकुलर बात को कम्युनिकेट करेंगे ऑडियंस को। तो आई थिंक वो थोड़ा एक काम होना, कंट्रोल में होना उस आदमी का और सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, ऐसे ही इम्पल्स पे कुछ ना कर देने वाला, एंड प्लस प्रिंसिपल्ड आदमी।
तो आई थिंक वो था, उसी हिसाब से चले. एंड अगेन एट द एंड एक इंसान है, तो रादर दैन ऐसा सोच के कि अच्छा पत्रकार कैसे होते हैं, पत्रकार हर तरह के होते हैं. तो आई थिंक उस तौर पे ट्रीट किया था कैरेक्टर को. एंड आई एम हैप्पी, थैंक यू कि आपको लगा कि सही बैठ गया. No, absolutely. A lot of it was, through the eyes and just that tense body language. Karishma, I've told you this कि आपको लोग बहुत पसंद करते थे, but कहीं पे लगता था कि probably as an actor, अब जाके you can say कि just look at me, I finally got the role that it tell people that I can act. Hopefully, yes. That is the idea after 2nd of June, that people take me and seriously, directors, producers, see me in a different light, and hopefully I get powerful roles after this show also. But it's been a long journey. कहीं पे आपको कभी confidence dip हुआ कि I don't know if this is going to work out for me the way I wanted to? Yeah, confidence बहुत stages पर dip हुआ था, but somewhere एक ray of hope था कि I will not give up that soon. I think I deserve it and I will get it. So एक positive aspect भी था मेरे एक nature में. Harman is looking at me. And everyone's looking at Harman. Yes. I want to tell you, when we saw you, we were like, पहले तो सब हैरान हो गए और उसके बाद आश्चर्यचकित रह गए. You fit the role like how, and then it made us realize we've missed you on screen. I'm sure once this is out, you're going to get far more roles और फिर आप ये बोल नहीं पाओगे कि I've left it and all. फोन नहीं उठाएंगे किसी का भी. But just going back, it wasn't things didn't turn out for you the way probably how you had imagined. Absolutely. The press at that time was pretty mean to you. Yeah. Did that affect you? Yeah. कहीं पे आपका confidence उससे break हुआ? I won't say confidence though, for sure. I'd have to say I was also in my late 20s. I was 27, 28 at the point. I'm glad that you admit that the press was at some level, I would say, mean. So that kind of hurts you a little bit because when you work hard, you train hard, you आप अपना best foot forward डालते हो. Yeah. At the end of the day, the films have to work. You're as an actor, whether you're a lead actor, whether you're playing an important part, you're a part. At the end of the day, the film is an entire entity by itself. In this case, the show is the entire entity. So, it definitely hurts. It does throw you into a spanner. It makes you suddenly question, why do I need to subject myself to this? It's not like you've committed a crime. You've done your job. Fine, it didn't land well. It's part and parcel of pretty much everything that one does in life. I think that kind of threw me off to the degree that I said, okay, then I don't really want to subject myself to this. I think I can move on to other things which I enjoy. You want to wake up every morning and be excited. Yeah. You don't want to be fretting. And there was a point where I would fret to even pick up the newspaper because every second there would be some random thing in the paper that would bother you. Yeah. I mean, I still remember at that point I would actually, tell the guy downstairs to make sure the newspaper takes out anything about me before it reaches my parents. Yeah. So it starts taking a toll on you on so many accounts. And the family, yeah. Yeah, so then it just makes a point that forget it. Let's just move on to, I come from a filmmaking background. That's what my parents did. So I just took that on very happily, loving that absolutely. But also loved this. So we'll see how it goes. तो मैं तभी पूछना चाहती हूँ that for, like you said, you got hurt with all that was happening. And you took a break. Yeah. Did you at that time think I'll come back later, or it was just too painful for you to? No, I mean, after a point, you tend to move on, right? You tend to move on with things, and then you just, I mean, the kind of person I am, once I get into something, then that's all. I've got my blinders on, and this is all I'll do, and I'll just go all out. So this just came out of nowhere. And I'm glad that you have a few good words to say, which is I'm sweet. sure you've heard this all day today. Yeah, but I mean, it's still in a very controlled environment. I'm waiting for the real verdict to come out, and that's something that you're always a bit anxious about since you've put in a bit, But let's see. I'll take things as they come. But तो अब तो newspapers आएंगे. अब headlines क्या anticipate करें? What do you think the headlines should be after the show's out? Any Blockbuster. That Scoop is a great show. That's all one wants to. One of the best For the sake shows of, I think, the whole team, everyone. performed. Yeah. Yeah, I think मतलब The entire शो team deserves. का जितना appreciation आया, I think उसी के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान है. So when you went through all this, Harman, how do you process the whole nepotism debate? What were you thinking when you would hear
things that people, the insiders, have it easy and all of that? Well, I mean, if they had it easy, I wouldn't be here, and you wouldn't be asking me these questions. So I think it's a debate. There is some validity to it. I cannot deny, but the same validity exists when you talk about a businessman's son, a cobbler's son. You learn the tricks of the trade. You are a part of the trade. I think every father owes it somewhere to themselves to give the best to the next of kin. I'm a father recently, and I know I'm already thinking of what I could do for that kid when he grows up. So I think that's a very natural progression of the human race. We all fend for the next of kin. After that, you got to make your own path, right? And for me, even though the first film didn't work, and then I had a couple more which didn't work, my father would keep insisting on doing another film. And the one thing I told him very clearly is that I will never let you do another film for me, because you've done your bit as a dad, and then the rest is my journey, my life, my destiny, and my hard work. And wherever it takes me, and I'll take it. And I never let him actually do anything with me again. So in fact, the fight at home would be the other way around. Where you'd expect me to say, Dad, let's do something. It was like, Dad would be like, I want to, and I would be like, nope, no. I'm not working, because ये मुझे मेरी ज़िंदगी अब मैं कर लूँगा. Like as a parent, you give your kids education, you give them an upbringing, and then it's upon them. In this case, he gave me what he could do best for me, and then it's upon me. So yeah. They say an actor is as good as his co-actor. और इसमें, like I said, छोटे से छोटा role करने वाला actor also did so well. You guys knew each other before this show, because there's such seamless chemistry and everything so synchronized. How did that come about? नहीं मतलब रीडिंग्स में हम पहली बार मुलाकात हुई थी हमारी. हम तीनों की ही आई थिंक पहली बार हम लोग तभी मिले थे. तो उससे पहले कुछ नहीं था. रीडिंग हमने मेरे ख्याल से 5-6 दिन की हमारी टोटल मिला के रीडिंग थी. फिर हमारे न्यूज़ रूम सीन से शूट शुरू हुआ था. तो आई रिमेंबर के एक दिन की हमने शायद वर्कशॉप की थी. एक दिन की हमने छोटा सा कि अच्छा एक सीन करके देखो कि कैसे होगा, क्या होगा. दैट इज़ इट. आई थिंक ह्यूमन लेवल पे जो है ना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी एक समझ बनी. मतलब वहीं पे रीडिंग के दौरान बीच में ब्रेक्स होते थे, और उसमें जो आपस में बातें होती थी, आई थिंक उसने काफ़ी कंफर्टेबल किया एक दूसरे के साथ. तो जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, आई गेस वो उसकी वजह से. और इट्स नॉट लाइक जस्ट द थ्री ऑफ अस, मतलब उसमें और भी सारे लोग थे. तो आपको सब लोगों को नाम से आप जानते हो, उनके बारे में कुछ बात भी पता लग गई आपको, कहीं साइड में खड़े होकर किसी ने कुछ बताया. सो इट वाज लाइक अ टीम ओनली. एंड आई थिंक वही केमिस्ट्री बनाती है, वही चीज़. और आई थिंक वही वर्क कर रही है, अगर आप बोल रही हैं तो. गुजराती बोलने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला था, because she was वो हमेशा बोल देते बहुत ज़्यादा. सबटाइटल्स ही also सेट पे भी यही बोलते थे कि सबटाइटल करके बात बीच बीच में कोड में कुछ बात करके चले जाते हैं. पता नहीं क्या हो रहा था भाई. It felt like some MI5 code going on. फाइनली यही समझ आती कि ठेपले की बात हो रही है. प्लीज कुछ भी सीक्रेट बात गुजराती. अच्छा, बहुत वक्त नहीं है, but I'm going to just end this by asking, are you going to help me with any rumors, because that's what the conversation was before the camera was on. भाई अब क्या बताएं यार. What is the rumor that you've heard? I've heard nothing. You were going to tell me. He's working in a film which is Please A say rumor about you that she's you want so to be scared to true. say she knows that she says it what's coming next. हाँ. इसे पता है कि हाँ, मारो पैर को लौड़ी. बताओ. brilliant comeback. A rumor about you want should be true. Oh, I was in sync. A rumor about me which I want to be true. I mean, I wish this was a rumor, but it's not. But no, there is no such rumor that I've heard which I would want to be true. Okay. Most rumors I'm hearing, I'm like, why? Up to, I think better days are ahead. Well, the days have been good. No complaints. I don't think so. I want to term it as a rumor. I want it as a reality. I want to earn and win a film fair one day. Oh, wow. Nice. God bless. Manifesting it on this show. Thank you. सुबह यार मेरे बारे में कोई रूमर ही नहीं उड़ाता कि जिसको लेके मैं सोशल सोचूंगा मीडिया में ही नहीं है कि रूमर कुछ होगा. तो वैसा कोई रूमर नहीं है. जो आप चलाना चाहें, हाँ, उड़ाना चाहें अपने ही बारे में. कुछ भी नहीं. मतलब उस तौर पे ना बड़ा बोरिंग आदमी हूँ मैं. आई थिंक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. आई एम हैप्पी. सब सुकून से है. हाँ, बिना बात करना ट्रबल नहीं चाहिए मुझे, बल्कि कि अब कहीं से कोई Wisdom. फालतू की बात आ जाए. शांति से मजा करते हुए लाइफ जो है ऐसी कटती रहे बस.
Bilkul. Thank you so much, guys. This was such an amazing interview, and I've enjoyed the show, and I can't wait for everyone else to watch it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.